नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी मेधा जी जुड़ी हैं, मेरे साथ अभी बाला ये जुड़े हैं और पंकज जी जुड़े हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं। तीनों को हम प्रणाम करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं जिसके लिए मैं बड़ी उत्सुक हूँ। सो मेधा जी, बाला जी एंड पंकज जी, आप सभी का स्वागत है। मेधा जी, ये दोनों पवन और अरुणिता को मेरे हिसाब से आपने बहुत एक तरीके से सपोर्ट किया है उनको ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट करने के लिए। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। I found I got to know about Pavandeep Rajan first. I basically stumbled across one of his videos, September 2021. एंड मैंने सुना कि ये कौन है करके मैंने सुना वो वीडियो और ऐसे अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या ये प्रोग्राम है। फिर देखा कि ये इंडियन आइडल है एंड बाय देन ही हैड बीन डिक्लेयर्ड द विनर. So I think it saved me a lot of heartache that a lot of fans would have gone through in the last so many months. फिर मैंने चालू किया यूट्यूब पर देखने के लिए इनके गाने और फिर इतना मुझे आई जस्ट बिकेम अ टोटल फैन. और फिर अरुणिता का मैंने आवाज सुनी और मुझे लगा कि अरे शी इज फैंटास्टिक. एंड देन आई सॉ दिस टीजिंग हैपनिंग एंड आई वाज सेइंग दैट ये क्या है. Some TV shows, why don't they focus on singing rather than this teasing business, you know? But I was captivated. I think all the Indian idols were fantastic, all of them. So that's how I got essentially connected. And then Pankaj and we worked together on our some events together. I So think it's 6 years now. that's right. Five, Six six years. years. Yeah, we first worked on 2020. So event Rajasi karke ek event hai, Marathi event that of ladies that I've been organizing. So that's why I said to Pankaj, have you heard this Pavandeep Rajan? And he said, yeah, I know them. I'm a big fan. So that's how we connected. And then when we found out that मैंने ad देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो फिर मैंने वो डॉन करके है जो उनको लेकर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया. सो मैंने उनको फोन किया कि ऐसे सुना है आपका एड देखा मैंने. सो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द फर्स्ट फैन इन ऑस्ट्रेलिया टू कांटेक्ट मी. So that's how it started, really, the conversation. And Lovely. Pankaj and Bala, please add in terms of how did you and I then said to Dawn that look, I'm happy to help with whatever help you need. At that stage, we were not looking at Canberra. I think it was more Sydney and Melbourne. But for one, I've got a private commitment on the weekend that they're coming to Sydney, and that's how this conversation started about then why can't we do something in Canberra? I think मुझे लग रहा है कि ये जो इंडियन आइडल, ये जो ट्रूप शायद दूसरे जितने भी जीते हुए हैं, जितने भी विनर थे, उनको वो लोग जितना पॉपुलर नहीं है, बट ये दोनों बहुत पॉपुलर है अभी. ऐसे यहाँ का यंग मास दे आल्सो लाइक, दे आल्सो Yes. नो देम वेरी वेल. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो Wow. मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव वाइब है, तो खाली बस उसको टारगेट में लेके पहुंचाना है. Definitely, आई थिंक सो. definitely. So, I just wanted to know from you, Bala, your favorite song of Pavandeep and Arunita, or with love, we call it Arudeep. I recently, Mehta shared me recently the song composed and sung by Pawanji about the Independence Day. Tiranga. Yeah, Tiranga, Tiranga, Tiranga. Tiranga, yeah, Okay. Tiranga. So yeah, so that was the one I loved so much because it was composed by his own. So I know Oh, he singers composed so love to many. sing He's other so people's talented. yeah other people's songs, but when they compose their own and sing, that's different always. Certainly. What do I you, can't remember other songs, but yeah, so I do listen a lot of their music after I come into this picture. Yeah. what about you, Pankaj जी? आपको उन दोनों का सोलो कौन सा पसंद आता है और अरुदीप का कौन सा पसंद आता है? देखिए एक्चुअली अगर पवन के साथ चलते हैं, क्योंकि मैं ऐसे फॉलो जब कर रहा था उनका उसी टाइम को, आज ही इज एक्चुअली डायनामिक, ही हैविंग ए डायनामिक स्केल लाइक दैट लेवल. एनी स्केल ही कैन कवर, यू नो, लाइक नीचे मतलब डाउन स्केल हो या हाई स्केल हो, वट एवर, एंड एनी टोन, लाइक इट्स कॉपी लाइक ए किशोर कुमार, कॉपी लाइक ए मोहम्मद रफी, कॉपी लाइक ही इज जस्ट कॉपी ऑफ ऑल सिंगर्स इन All, इंडिया. all, all. कुछ भी उसके मुंह वो अगर शुरू हो जाते हैं तो लगता है कि बस
शायद मोहम्मद जैसे आप बोलते हैं किशोर कुमार के बाद शायद पवन का टोन ही उसको सूट कर रहा है ऐसे. सो इसीलिए मुझे लगा कि ही इज a God gifted and they are really nice. And then when Arunita joined, so it is like another dynamic like angle, like वो दोनों का जोड़ी is so good. Like मुझे नहीं लग रहा है कि पवन अभी वो जो दूसरे जो हमारे इंडियन आइडल जो अदर ये है क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स, बट मुझे लग रहा है कि पवन शूट करता है वो अरुणिता के साथ, और कोई होंगे तो शायद इतना हमें जम नहीं पाएगा. तो इसीलिए दे आर रियली फैंटास्टिक. आई जस्ट लव So रियली all songs or any particular song which is very close to you? लुक हिज लाइक कैसे बोलूं, वो लोग ऐसे हैं ना, कुछ हर गाना कोई भी गा लेते हैं तो वो दिल को टच कर जाता है. Agree. तो हर एक गाना अच्छा. एक्चुअली इन दिस टाइम दे डोंट हैव देयर ओन लाइक Yeah. कलेक्शंस. सो अभी अभी शुरू हुआ है सम एल्बम्स, बट नॉट इवन फिल्म ही. Hmm. So that's why you can say like every song is good, like good for like in their mouth, like whatever they're singing, it is really. I loved all songs. And Yes. Joy Ho last I saw is last ये मैं एडिट कर रहा था उनका थोड़ा कुछ कैप्शन बनाने के लिए, उसमें अच्छा. जॉय हो कितना फैंटास्टिकली दे लाइक sang दो both लोग ब्यूटीफुल, अमेजिंग, रियली Wow. नाइस. ये Wow. मेधा जी, मुझे ये बताइए आपका कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट है? पहला song जो that comes to my mind, Hmm. which made a really lasting impression, is Yes. that song that from अग्निपथ. अभी मुझ में वो है ना वो हाँ. he sang for that episode when he sang in front of Karan Johar. हाँ. So I just love that. But I love, as Pankaj ji was saying, I think the beauty is that I didn't know so many songs that Arjit Singh has sung, but I heard them first time when Pawan Deep sang. exactly, yeah. And it sounds so nice. Like, I know this is not very politically correct, but I will say it nevertheless, that he literally owns these songs. And I had heard Arjit Singh before, but I don't know, to some extent he never connected with me as much. And but when I listened to the same songs in Pawan Deep's voice, it was like phenomenal. The impact. I have got no idea. I have got no Okay. idea why. We agree, all Miraji, we agree. They are really, you can't like imagination out of imagination. उनका हाँ, वॉइस बिल्कुल. इतना ये है कि कुछ में कहीं पे भी कोई गाना भी गाए वो लगता है कि जैसे वो मतलब ओरिजिनल सॉन्ग्स इट लुक लाइक. Oh, ekdam, they owning and with Arunita, I mean, again, she is like phenomenal. And I don't know, one particular song that really मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो तू ही रे उन्होंने गाया था ना. Yes. yes. बहुत सुंदर. She sings. I mean, she sings everything fantastic. Anything. Fantastic. Very, very true. So, Balaji, I just wanted to know, people there, how much they are in love with music, how much musical they are, like people around you, maybe from India, maybe they're not from India. How is the music scenario there? Just an example, I attended a Nepalese Gutike function on the Saturday. Nepali communities love Pawanji. So they played the Pawan. I can't remember the songs, unfortunately. I'm not good in those languages. So they played that Pawan songs there, and then they all love the Pawan's songs. And I think for this concert, we are expecting around 200 plus from the Nepali community itself. So people are very interested, and yeah, I guess we'll be expecting a huge crowd, and then we'll see. Yeah, so hopefully we'll share that video with you as well once it happens. Yeah, so लवली. पंकज जी, यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ, पवन एंड अरुणिता को लेकर अभी आपने क्या क्या सुना है? क्या लोग चाहते हैं या क्या रिएक्शन मिल रहा है इन दोनों को लेकर? नहीं, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, एवरीथिंग. लाइक किसी को भी बोले तो सब लोग इतना तो कम से कम बोलते हैं, बिकॉज लुक
ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली नाउ इज द सेकंड जनरेशन गोइंग ऑन, लाइक सेकंड जनरेशन। जैसे अभी बहुत सारे यंग ये है जो कि इतना फॉलो नहीं करते हैं इंडियन बॉलीवुड या इंडियन शोज वगैरह। मोस्टली दे लव टू गो थ्रू ऑल लाइक लाइक अमेरिकन अमेरिकन, हाँ। exactly American you can say like TV serials or whatever the movie and all those things and the songs. So मैं वही बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट पवन दे रिकॉग्नाइज पवन अरुणिता यंग जनरेशन में अगर ये हो रहा है तो दैट मीन्स कुछ तो मतलब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा पॉजिटिव ये मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रियली गोइंग टू बी बहुत बड़ा अच्छा शो जाएगा हमारा, तो हम लोग बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं अभी। बस फिंगर क्रॉस हो जाए, अच्छा होगा। और अभी थोड़ा सीजन सीजन नॉट सीजन वाइज आफ्टर कोविड थोड़ा सा डाउन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जो भी कोई भी शो आ रहा है थोड़ा इतना ये नहीं जा रहा है जो जितना एक्सपेक्टेशन था। और अनदर थिंग इज कैसे बोलूं आपको कि बहुत सारे कम्युनिटीज आ गए हैं। पहले क्या होता था कि थोड़ा इंडियन हो तो ओनली इंडियन बेस्ड प्रोग्राम होता था, सब लोग एक ही जगह पे कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, कम्युनिटी बड़ा हो रहा है तो सब लोग अपना अपना लेकर आ रहे हैं। जैसे साउथ से दे ट्राइंग टू ब्रिंग द साउथ, some they bring like Gujarati people they're trying to bring Gujarati items हाँ, क्योंकि it's a big culture it is. and every state have their own like identity, so that is a big and for this we are doing but we are looking for all of them ये जो प्रोग्राम है ये सबके लिए। तो इसीलिए Certainly. थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसका ये मिलेगा, मतलब मुझे लग रहा है कि वो सक्सेस होगा, बहुत सक्सेस होगा, यूजली बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल होगा हम क्योंकि तो अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। love. और हमारा टिकट भी इट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ, सो आई थिंक इट्स वी हैव अ गुड ये लाइक गैप ये हाँ, ड्यूरेशन। टाइम है। सो मुझे लग रहा है बाय बिफोर 1 week बिफोर मे बी इट इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट एवरीथिंग एंड ऑल। ग्रेट। सो इसके लिए कोई आपने अलग से मार्केटिंग प्लान की है? अलग मीन्स देखिए हमारा यहाँ लोग जनरली हम लोग सब आपस में अटैच्ड है, जैसे फेसबुक, थ्रू फेसबुक because we are Medhaji is she's one of the like leading woman who is going through all their community and all this program and all this thing. I also always related with like most of community. Bala also committing in the community programs and all those things. तो वो क्या होता है ना, हम लोग सब आपस में the Canberra is a very small place and we at least 50% people they knows each other, at least आप cover कर पाएंगे। So that's why I'm saying it's a word of mouth. जैसे कोई किसी को फोन कर दिया तो एक फोन से वो दूसरा फोन 10 जगह चला जाता है हमारा। और नेक्स्ट है फेसबुक, और फेसबुक में हमारा क्या है ना, हर एक कम्युनिटी का एक अपना अपना उनका है। जैसे इंडियन जैसे तेलुगु कम्युनिटी, सपोज ओडिशा कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, दे हैव देयर ओन फेसबुक ये। तो एक बार आप उसमें एंटर कर गए तो यू कैन फाइंड एवरीवन लाइक ऑल 100 200 300 पीपल देयर। वाओ, So that means हमें इजी हो रहा है लोगों के पास पहुंचाने के लिए। ग्रेट। That's a way। और आपस में फिर फोन तो हो ही जाता है, मैं तो दिन भर मेरा उसी में कॉल जा रहा है। I just But also the grocery stores, they've gone around, the Indian and Nepali grocery stores, the flyers are out there everywhere. Then we have a temple here, तो वहाँ वो मंदिर में भी लगा है फ्लायर। So जहाँ पब्लिक प्लेसेस है ना, जहाँ हम इंडियंस लोग काफी आते हैं, तो वहाँ सब लगाया है उन्होंने प्रमोशन के लिए। बिल्कुल। Media partners, we have some radio stations here. And radio station, that's true. So I've been that radio 2XX is and radio Manpasand. So other two stations. So अभी वो 2XX radio पर Nepalese radio as well. We've been playing the songs there. Telugu Bani. Okay. How nice. So मेधा जी, media partners. Okay. मेधा जी, एक बात बहुत फैंस जो है ना इस बात का वेट करते रहते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द टाइम दैट इफ समबडी इज गोइंग लाइव, सो एनी अरेंजमेंट फॉर गोइंग लाइव, मे बी इंस्टा लाइव, मे बी यूट्यूब लाइव, और मे बी FB लाइव? Yeah, I mentioned to Pankaj ji that we should try and do that because I know how much I rely on the live. So we've got to try and do that. So definitely we've got that in mind. Just have to work through what and but आजकल Pawandeep himself is going live. Yeah.
Yeah. So if he decides to go live, then we don't need to do anything. Yeah. So let's see what happens. Depends No, but on the it's national my Let's see. promoter. please, We please, have please, some Depends on the contacts, national so we're promoter, trying to. and I don't know whether he got agreement with the artist manager whether we can stream live. And Yeah. but I do have a permission that we can record and put it on the YouTube channel. Oh, lovely. But I'm not sure about the live streaming. Okay. So any last word you want to share? Maybe I missed something and you want to add that. मुझे लग रहा है सब बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप बोलते अगर और एक बार भी कर सकते हैं तो क्लोज टू प्रोग्राम वी कैन डू अगेन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इस एंड हमारा ये कन्वर्सेशन अगर पवन और अरुणिता के पास किसी तरह पहुंच जाए तो वो लोग हमें पहले से भी देख सकते हैं, हाउ वी आर लाइक बिग फैन ऑफ देम, तो अच्छा लगेगा। ये ना मैं बताऊं पंकज जी, मैं पहुंचा हूं उसके पहले ही जो पवन और अरुणिता को बहुत प्यार करने वाले फैंस, इनफैक्ट मेधा जी विल आल्सो एग्री विद मी कि यही लोग ना क्लिपिंग ले लेके उसको टैग करते रहते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं कुछ करूं उसके पहले फैंस वहां तक पहुंच जाते हैं और वो शेयर कर देते हैं, तो दैट वे आई एम क्वाइट श्योर कि वहां तक पहुंच जाएगा। थैंक यू टू यू, लाइक आप भी हमें इससे मिलके वो बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट इन फ्यूचर ऑलवेज कुछ भी प्रोग्राम होगा हम लोग आपको कांटेक्ट में रहेंगे, सो एटलीस्ट इट इज रियली नाइस। So I just wanted to add one thing that Yes. for me this is like a dream come true because मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया था कि हम कैनबरा, वैसे छोटा ही है क्योंकि हमारे सब कॉन्सर्ट सिडनी में जाते हैं, मेलबर्न में जाते हैं, तो फिर अभी ये इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पंकज जी एंड बाला फॉर पिकिंग अप दिस कॉन्सर्ट. And that from my point of view, I'm hoping that this is like a starting for them, that Canberra has got a market. And so big recently we had Sonu Nigam and we had Hariharan ji, and that was they were good concerts. But what usually we find in Canberra is that the artists either come towards the tail end of their career. Generally they come towards the tail end of the career. When they are really big, they go to Sydney, Melbourne, and basically Sydney and Melbourne. Even Brisbane is not quite ready yet. So it was so exciting to be able to host these Pavandeep and Arunita, who are really starting at the launching of their career. Correct. And I say to everyone that देखो अभी मौका है, 5 साल में we will not be able to afford them. So that is my line. I just say to people that just come and watch them now, because you will not be able to afford in Canberra Pavandeep and Arunita in 5 years time or 10 years time. So I'm just over the moon, and we want to, from our point of view, we just want to give them the best experience. Wow, great, great. Exactly. Yeah, और हम कोशिश भी करें। हाँ भला, okay, go on. So we want to make this concert very successful, and also we want to make Pavan and Arunita proud that Canberrans love them as well. So that is our main goal at this point. Lovely. चलिए, थैंक्स अ लॉट इतना समय निकालने के लिए, इतना पूरी बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। हम एक बार फिर से मिलेंगे जैसे शो होने वाला होगा, पक्के से मिलेंगे। Thank you very much. Thank you, Runaji. Thank you.